students. How are you students? I hope you are fit and fine at your home. Dear student, we are learning our chapter number 3, whole numbers. In my previous video, I explained you exercise 3C. And in this, we'll learn how to apply the rule that commutative property is not applicable on the subtraction. Now in exercise 3D, first of all, again we learn the properties of multiplication of whole number. In my previous video, I explained you the properties of addition of whole number. All these properties are same, only the fourth property is different. Now here we see that our first property is a closure property. In closure property, we learn that if we multiply two whole numbers, then our answer is also a whole numbers. Clear this one? Now the second property is a commutative property. Commutative property का other name है order property. If we change the order of the number, suppose हम multiply कर रहे हैं 3 को 7 से, तो और 7 को 3 से, तो in both cases our answer is 21. Now we see that commutative property is applicable on addition as well as on multiplication. Now our third property is associative property, and in this property we have three numbers and its other name is grouping property. ग्रुप बनाएंगे, इसमें ग्रुप में हमारे पास सपोज ये 3 नंबर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द लास्ट 2 एंड देन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2. तो देखिए इस तरह से हम ग्रुपिंग बनाएंगे, पहले लास्ट 2 की या पहले फर्स्ट 2 की, कोई भी बना सकते हैं, ओनली हमें ग्रुपिंग नंबर्स डिफरेंट करने हैं. तो देखिए अब हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना. किसी चीज को हम बांट रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग अंडर ओवर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन. या तो हम एडिशन लेकर करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्शन लेकर करेंगे. अब देखिए कैसे है. मान लो हमने नंबर राइट डाउन किया 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 3, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर आपका जो है प्लस लगा हुआ है. ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा किया जा रहा है ओवर एडिशन. तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये तो हो गया ओवर एडिशन. यदि ओवर सब्ट्रैक्शन होगा तो इस प्लस के साइन के प्लेस पर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. बाकी सारा काम हमारा सेम है. नाउ इन द फिफ्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या है, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो देन द आंसर बिकम्स जीरो. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. इसमें क्या है, जब आपका कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा देन द आंसर विल बिकेम सेम. सेम वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा. तो देखिए ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है एंड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन वी अप्लाई ऑल दीज प्रॉपर्टी. सो लेट अस वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. नाउ इन एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 you have to given some filling the blanks and you have to fill according to their property. And now in question number 2 you have to given some numbers and you have to write the name of the property. Now in first part your number is given 19 multiplied by 17, that is equal to 17 multiplied by 19. Now here you see that in these both cases your numbers order is changed. और ऑर्डर किस में चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. सो इट्स नेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसका आंसर है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन दैट 16 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज अ होल नंबर. अब देखिए ये किस चीज में होता है कि जब हम एक नंबर होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट ए होल नंबर. हियर 16 इज अ होल नंबर, 32 is also a whole number and their multiplication is also a whole number. तो इस प्रॉपर्टी का नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू गिवन 29 multiplied by 36 and it is in a bracket. The third number is 18 and on the right side you have to given 29 multiplied by bracket 36 multiplied by 18. Now here you see that your grouping is made. और जो grouping होती है वो किस प्रॉपर्टी में होती है? एक तो grouping है, second thing इसमें आपके पास 3 numbers है. So this is called the associative property. Associative property. Now in the next part, your number is 1480 multiplied by 1, that is equal to 1480. It means here we see that number is a multiplied by 1, so it is the multiplicative property of 1. Multiplicative property of 1. Property of 1. And in the next multiplicative property of 0, because when number is multiplied by 0 then the answer will become 0. So here we write multiplicative property of 0. And in the last part you have to given 72 multiplied by 98 plus 72 multiplied by 2. Now here you see that 72 comes 2 times. So we take common s and here is the plus symbol. 72 common liya from this part, your 98 is left. And here your symbol is addition. So you write here plus symbol and now in this your 2 is left. So you write this. Now here you see that this is the distributive property of multiplication over addition, because here is the addition. So we write distributive property of multiplication over addition. Clear? Now I hope you understand how we find that which property is applied here. Now we do the next question. Now here in the question number 3, first part you have to given a statement 647 multiplied by 13 plus 647 multiplied by 7. Now you have to solve this question by using property. Now here you see that 647 is common in both parts. So first we write here 647. Now here is the multiplication symbol. So you write the multiplication symbol. In the first this part you see 647 आपने बाहर नंबर ले लिया है. Your 13 number is left inside. तो आपने यहाँ पर 13 write down कर दिया. Now this symbol is a plus. So you put here plus symbol. Again in this number, this 647 is a common and your 7 part is left. Now first of all you solve this bracket, and after solving the bracket you write 13 plus 7, that is equal to 20. Now your multiplication is easy. Here you have 1 0. So first of all you write here 0 and then you multiply 647 by 2. 2 7 ja 14, then 1 carry, 2 4 ja 8 plus 1 9, then 2 6 ja 12, and this is your answer. Clear this one? Now we do one more part. Now in question number 4 you have to given the
same question, but here you have to given the minus sign. Now you see that 9870 is a common part. So we write it here 9870. Now here we take it as a common, and here we see that our 561 is left. Here is the minus symbol, so we write here minus, and in the next part your 461 number is left. Now first of all you solve this bracket, and after solving this bracket you get 100, because 561 minus 461, your number will become 100. Now you have to multiply this number by 100. Now here you see that you have 3 zeros. So first of all, on the right side we put 3 zeros. Now your this number 987 is a multiplied by 1, then this number comes itself 987, and this will be the answer. And I hope you understand this concept. Thank you and have a nice day.